Real estate stocks have stayed up, real estate prices have stayed up and away in many areas, the Delhi outskirts for example. But sales have not stayed up that much. Yes sir, in the top few metros, 5.5 lakh units of unsold apartments. Yes, मुंबई अकेले में 1.8 lakh unsold flats हैं. 1.5 साल का इन्वेंट्री है मंथली रन रेट के हिसाब से देखें तो. हालांकि लग्जरी हाउसेस का स्टॉक बढ़ रहा है. बिल्डर्स इन द पोस्ट कोविड बूम, 5 साल से रियल एस्टेट मार्केट हैज बीन बूमिंग. कोविड के बाद तब से आज तक रियल एस्टेट हैज बूम. बिल्डर्स who were in almost bankrupt have come out of bankruptcy. They have sold excellently, but सारा पैसे उन्होंने फिर लैंड परचेज और न्यू कंस्ट्रक्शन में लगा दिए हैं. यू कैन सी क्रेन्स ऑल अराउंड इंडियाज बिग सिटीज. इसके चलते स्टॉक ज्यादा क्रिएट हुआ है. थोड़ा सा सेल्स स्लो डाउन और यदि हो, then we don't know what will be the state of this market. It is susceptible to an external shock. Delhi NCR is not much better. 84,000 units of unsold stock. Some hotbeds like Narela make up almost half of that. Discounting शुरू हो गया है. Hyderabad was a boom town for so many years, but पिछले 5 सालों में unsold inventory almost 1 lakh units, doubled from a few years back. केवल ब्राइट स्पॉट्स बचे हैं बैंगलोर और पुणे में, where unsold units for a city like Bangalore, hardly 50,000 units, less than a years of inventory. Sounds decent, but it's an isolated case. बाकी सब जगह ओवर कंस्ट्रक्शन चल रहा है. I hope they don't increase inventory continuously. Builders are notorious for riding on booms. I hope no external shock comes. Not the right time to put more money in real estate. Maybe land at some places, but don't give more profits to builders. The time to divest real estate stocks is also coming, my friends.